तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग पहली बार खेलने जा रहे हैं रेड डेड रिडेम्पशन, जो कि रेड डेड रिडेम्पशन 2 के आगे की कहानी है, बट दिखाई पहले पार्ट में। तो अभी अभी आया ये, शायद से अराउंड 27 अक्टूबर या 29 अक्टूबर को रिलीज़ हुआ था पीसी पे। बट ये था पीसी PS4 पे या 3 पे, ऐसे कुछ टाइम था जब का था। ये बहुत पुराना गेम है सचमुच। अभी पता नहीं, इसको भी 10 या नहीं 10 से ज़्यादा हो गई। GTA 5 से पहले का गेम है ये। बट आज हम लोग इसकी एक सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने सुना है अच्छा गेम है ये बहुत। इसमें हमारे प्रोटागोनिस्टिक हैं जॉन मार्स्टन, जो कि आगे की कहानी हमने एपिलॉग तक की नहीं थी शायद। हाँ, रिस्पॉन्स कम था इसी वजह से छोड़ दी। बट अभी आगे शायद से रेड डेड रिडेम्पशन लौट के आए 2 लौट के हमारे चैनल पे। बट जब तक के लिए हम चलते हैं अपने गेम में। जो भी चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। चलते हैं गेम में। That they are finally bringing civilization to this savage land. I could not agree with you more, my dear. My daddy settled this land, and I know he'll be looking down on us, pleased at how we help the natives. Yes, they've lost their land, but they've gained access to heaven. But Father, do you mean unless they're destined to go to hell? That hardly seems fair. What I mean to say, Jenny, is that there is a great deal of difference between an innocent and a savage. I never thought of it that way. Yes, they live like animals, but they're happier now. Not only do people now have cars, Father, but I heard that pretty soon we will be able to fly. No, only angels can fly, Jenny. No, apparently people can fly. Didn't you hear? Out in Kansas, a man even got a car to fly. I hardly think so, Jenny. Apparently, Mr. Johns wants to run for governor, which is why he's so concerned with cleaning up the state. Nate Johns. Yes. His family is nothing but hillbilly trash that came here after the war. I don't want to be judgmental, but this state should not be ruled by such a disgusting family. A family without class. Apparently, the Johns family have made a lot of money.
and he has a lot of friends in politics. Mrs. Bush, money isn't everything. There are many things that money cannot buy. It seems that money can buy voters, though. What you must remember, my dear, is that we have been brought here to spread the word. And the word and civilization, they are the same thing. They are the gifts. It is the opportunity we have, the chance to live among people who are decent and who do not kill each other. And who let you worship in peace. It's so confusing, Father. Sometimes I find it impossible to make the distinction between a loving act and a hateful one. I mean, they often seem to be the same thing. Yes, Jenny, it is confusing. But you only have to ask me if you need help. Indeed. Well, here we are, Mrs. Bush. Armadillo. तो हम आ चुके हैं आर्मडिलो में। बट एक चीज़ बुरी लगी मुझे इस गेम की, जो कि है SFX बहुत ज़्यादा है यार। यहाँ पे ऑडियो में इन्होंने कुछ दे भी नहीं रखा। साउंड इफ़ेक्ट वॉल्यूम भाई कितनी बढ़ा रखी है मैंने। और म्यूज़िक तो बिल्कुल बंद कीजिए, नहीं म्यूज़िक थोड़ा रहने दीजिए, और हेडफोन तो ऑन है। साउंड इफ़ेक्ट थोड़े कम कर दूँ। बहुत यार, बहुत ही ज़्यादा लगा म्यूज़िक मुझे। डायलॉग से ना समझ, बहुत सी डायलॉग्स हुए नहीं। तो कुछ सबटाइटल भी ऑफ कर लें भाई, ऑन कर लें, सॉरी। हाँ, सो अब है हम, तो सब चीज़ ठीक है। हाँ, सो अब है ये शायद से गेम बढ़िया। सो हमें आर्मेडिलो में, जो कि अब हम काम करते हैं, जो लास्ट टाइम मैंने तो अपने चैनल पे नहीं डाली, बट हमें 2 गवर्नर लेने आए थे। उन्होंने कहा था हमें अपने जो पुराने दोस्त हैं, जैसे कि बिल बच गया था, डच बच गया था, माइकल को हमने मार ही दिया था बाद में, और बहुत से हावियर बच गया था, बहुत से लोग बच गए थे। उनको हमें ख़त्म करना है, क्योंकि एक बार जो गैंगस्टर है वो गैंगस्टर ही है, आगे जाके बदलता नहीं है। बट यहाँ पे हम आ चुके हैं उन लोगों से बदला लेने के लिए। और बदला तो नहीं, बट गवर्नर ने हमारी घर वालों को पकड़ रखा है, समझो ना। अब हम गैंगस्टर हैं, अगर हम नहीं मारेंगे तो वो हमें मार डालेंगे। इस वजह से यहाँ पे हमें करना पड़ेगा ये सब काम, और उनके लिए हमने अपने दोस्तों को मारना पड़ेगा। और ये ड्रंक गिर गया यहाँ पे। चलते हैं यहाँ पे एक पहला मिशन। You must be John Marston. Sometimes. I'm Jake. Your friends from Blackwater hired me to guide you. They ain't my friends, but pleased to meet you, Jake. I got the horses saddled up and ready out front. तो ये शायद से कोई चचा हमें लेके जा रहे हैं कहीं पे, शायद से हमें मिलवाने ले जा रहे हैं, बट कोई नहीं। ओके, तो अब हमें अब हमें इसके साथ चलना है। अरे 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 भाई, घोड़ा संभाल ही नहीं पाया मैं। That's right. Ain't taken nobody up to the fort in a long time. Strange place for a decent fella to want to visit, if you don't mind me saying. Who said I was a decent fella? It's been abandoned for years now. Folks say it was built during the Mexican War. What kinds of soldiers around back then? Why'd they leave? Well, I ain't entirely sure. I heard they had to go up north to fight Indians, or maybe they got tired of being soldiers and went looking for gold. You know how things is.
So what are you doing up at the fort? I'm looking for an old friend. Well, like I says, you ain't gonna find many folk around those parts these days. Those you do find are about as sociable as an ulcerated back tooth. I mean, I ain't one to judge a man by the company he keeps, but... Well, he ain't been friends for a long time. तो हमें इसने पूछा ब्लैक वाटर सॉरी फोर्ट मर्सर क्यों जा रहे हो, तो हमने बताया हमें अपने एक हमने बताया कि हम अपने एक दोस्त को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम है बिल विलियमसन, जो कि हमने बोला नहीं बट ऐसे पता पड़ गया होगा क्योंकि वहाँ पे फिल विलियमसन, अरे यार मैं भूल जाता हूँ उसका नाम, टाइम हो गया ना खेले हुए। तो चलते हैं, ये लेके चलता है हमें फोर्ट मर्सर पे। Well, if you're fixing for some female company, you can do a lot worse than armadillo. Fine as cream gravy they are. Not like thieves landing. Dang, those girls ain't even fit for a drinking man to hole up with. I'm a married man, I'm afraid. Ain't we all? ये चाचा बहुत हरामी है। It was the marshal who hired me. Lee Johnson. Do you know him? I think I heard his name. Says he got a telegram from some Blackwater big bugs asking for a guide. I guess it's none of my business. That's right. You ain't very talkative, are you? Nope. I'm just chewing the dog, mister. It's how I am. I don't mean nothing by it. Trust me. There's things you're better off not knowing. Damn coyotes. What a waste of good meat. Almost there, Mr. Marston. Just over this hill. Yeah. ओह, तो आ चुका फोर्ट मर्सर। Listen, mister. This here's what's left of Fort Mercer. Some gang rode in and took the place over. So I understand. This is where we part ways, friend. You have yourself a good time. तो ये डरा बहुत रहा है, बट ये है कौन? सॉरी ये नहीं, बट जो भी है अंदर वहाँ पे। अरे हाँ, हम बिल विलियमसन को ढूंढने आए थे ना, क्योंकि सबसे पहले हमें उसे ही मारना है। देखते हैं कौन, बुलाते हैं उसको, दोस्त है भाई, आ जाएगा अपना तो। अब क्या पता, देखते हैं। Come for you! Bill Williamson! Come out here right now! Go away now, John. Don't make me kill you. Nobody needs to kill anyone, Bill. You must think I was born yesterday. You always did think I was an idiot. That ain't fair, Bill. You were as my brother. I've come to try to save you. Oh. Do I look like I need saving? Bill, please. They want to kill us all. I can help you. Well, you never tried to save me before. You only seemed to save yourself. Bill, I implore you, think about this. You implore me? You implore me? You always were one for fancy words. Oh. Well, things are different now, John.
Now I'm in charge! No more Dutch! And no more you. Implores. I implores you to go back and tell them to send someone just a little bit more impressive next time. Well? Oh. Poor John. भाई यार इसने तो हमें मार दिया, हम लेटे हुए हैं ज़मीन पे। बट हमने कहा उससे कि वो लोग सब मार देंगे तुमको, हम बचाने आए तुम्हें, और तू मेरा भाई था। बट उसने कहा नहीं, तुम्हें लगता है मैं कल ही पैदा हुआ हूँ। और इसने कहा कि मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम उनसे जाओ और जाके कहो कि किसी और को भेजें अच्छे को, जो मुझे समझा सके। नहीं, ऐसा तो नहीं कहा, बट उसने कहा किसी और को भेजे, इम्प्रेसिव को। और जॉन ने कहा ठीक है, फिर तुम नहीं मानते तो मैं गोली से उड़ा देता हूँ तुम्हें। बट उसने चला दिया बगल में जो खड़ा था वहाँ पे। तो हमें किसी ने बचा लिया। Well, you're alive. So it would seem. So, how do you feel? I don't know the polite word for it. I do. Stupid is the word we use around here. What were you doing? I was doing something stupid. Well, you'll be okay. Once you didn't die, the doctor said you'd be fine. He got the bullets out a couple days ago. Good. It cost us $15. I'm sorry, madam. Should have left me there to die. Did you want to die? I mean, was that it? Was that why you went straight out to Fort Mercer and picked a fight with the worst bandit in the county? To die, Mr. Mr. Marston. John Marston. Bonnie McFarlane. Miss Bonnie McFarlane. Well, you may be right, Miss McFarlane. I don't know. Huh. So what were you doing? I was trying to give Mr. Williamson a chance. For old time's sake. You know Bill Williamson? Knew him. Long time ago. Well, what was he like? Dumb. Just like you. Thank you, miss. See my hat? I have. And, what will you do now? Now I'm gonna take my time and go after him the less kind way. Well, that sounds very fun, Mr. Marston. Quite heroic, just like in those penny dreadfuls my brother used to read. Meanwhile, if you'll excuse me, I've got a ranch to run. Of course, if you're feeling better, why not take a ride with me later? Help me patrol the perimeter. You can earn back some of that money we wasted on doctor's bills. Of course. And thank you for saving my life, I mean. Next time, Mr. Marston, I strongly recommend you don't try to lose it quite so earnestly. I'll bear that in mind. तो इसने हमें बचा लिया, हम वहाँ पे गिरे हुए डले थे। और इसका नाम है बॉनी मैकफार्लन, मिस बॉनी मैकफार्लन। और ये शायद से वही है जो ट्रेन में भी थी। हाँ, तो इसने कहा कि डॉक्टर, कुछ दिन पहले हमने गोलियां निकलवा दी थी डॉक्टर से, $15 का बिल बना। और उन्होंने कहा तुम्हें वेस्ट नहीं करना, और तुम यहाँ मरने आए थे क्या? तभी तो इसने कहा तुमने मुझे मरने क्यों नहीं छोड़ दिया, पैसे वेस्ट करने से बढ़िया। तो उसने कहा कि तुम मरने आए थे यहाँ पे, तो
तभी तुम स्ट्रेट वहाँ पे सीधे फोर्ट मर्सर गए। और ये शायद से बॉनी मैकफार्लेन का रेंच है। हाँ हाँ, मैकफार्लेन रेंच। और ये आर्मडिलो है। हम यहाँ से यहाँ पे थे। फोर्ट मर्सर किधर है? ये रहा फोर्ट मर्सर। यहाँ से वो लोग हमें बचा के यहाँ से यहाँ तक लाए भाई। सल्यूट है। और चलते हैं आगे, देखते हैं रेंच। अब वहाँ हमें बॉनी मैकफार्लेन को ढूंढना है। अरे भाई अभी दर्द है क्या भाई? अरे हाँ, लंगड़ा तो रहा भाई जॉन। अरे जाता हूँ, उड़ा देता हूँ। क्यों पैसे बर्बाद किए? नहीं चला सकता क्या? कोई बात नहीं। Mr. Marston, back in the land of the living, I see. Figured it's about time I started paying back that $15. Well, no time to waste. The horses are saddled up over here. ओके, तो वॉक विद बॉनी मैकफार्लेन चला दूँ क्या? There's the foreman's office. It's also where we lock up good-for-nothing outlaws, such as yourself. ओके I'm happy enough with my current quarters right now, Miss McFarland. Okay, let's see if you can still ride a horse. Let's make a tour of the ranch so you can get your bearings. ओके, तो हमें बस इसके साथ घूमना है। अरे यार ये म्यूजिक कॉपीराइट दिलवाएगा भाई, कुछ नहीं। तो बस हमें घूमना है और यहाँ की चीज़ें देखनी है। To your right is the general store. You won't find Parisian high fashion, but it's good for the essentials. Very convenient. I don't think I've ever seen a ranch with its own store before. Come on, boy. And here's the corral. This one's for the horses. What do you think? I'm no expert, but it certainly looks like a fine corral. I suspect you've stolen more horses than you've broken. Now, where'd you get such an idea? First impressions are hard to erase. तो ये स्टेबल था, अस्तबल कहते हैं जिसे कि। That's the train station. Things sure have changed since the line finally got finished, bringing in all sorts of new folk like ओ yourself. भाई यहाँ Is that पे such वो a भी bad है, thing? Change is only स्टेशन। good when it makes things better. ट्रेन स्टेशन भाई, ट्रेन की पटरियाँ। That's the barn over there. Paul built it himself when I was just a little girl. Yeah! ओ And आ here we गए are, हम। back at the house. Let's stop for a while before we head out on patrol. You'll get no Okay. complaint from me, Miss McFarland. अब हमको हाइज करना है अपने हॉर्स को। Come on, this is the only chance you're gonna get to rest. ओके, अब बॉनी के घर पे जाना, ठीक है, कोई बात नहीं। पहले मैं जाऊंगा। How about a cold drink, Mr. Marston? Thank you, ma'am. Getting shot then riding a horse seems to take it out of you. I could use a rest. Sure. Come on in. I'll show you the house and then you can sit for a while. Thank you. Mr. Marston, Miss McFarland. remember me telling you about the trouble we've been having with rustlers and other undesirables? I do. Will you help me keep watch on the property line this evening? Sure. I want to see just who is trespassing on our land. This is a fine weapon. Come, let's head out. The country is really beautiful at around this time. ओके, तो हमें अब बॉनी की मदद करनी है और अब हमें पहली गन भी मिल चुकी है। अब हमें जाना है अपने घोड़े पे। या अरे भाई चढ़ जा। ओए हाँ,
चला दूं भाई, Let's तेरे go. भी Keep चलाऊंगा। your eyes open and try ओके, not to get yourself shot again. अरे ठीक है यार। Thank you, Mr. Marston. I feel a lot happier someone's along with me. I feel a lot happier now I got a rifle. Well, with your trigger itch and my feminine intuition, we should make quite a team. ओके, सो गन, ये रही हमारी बंदूक, और इसमें है थोड़ी ज़्यादा गोली है इसमें। हाँ सही है। अब क्या करना है I भाई? don't ऐसे ही। believe it. Those damn rabbits are back. ओके, Give me a hand with them, will you? Good shot. बिल्कुल। Let's see that rifle. I want a couple of these for the pop. यही Nice shooting. We got one. You're better at shooting rabbits than outlaws, I see. एक रह गया भाई। गया, एक और गया। या बॉनी, सॉरी बॉनी जी। Whoa! If it's हो not गया the भाई। rustlers stealing our cattle, it's the rabbits stealing our crops. It ain't never easy living off the land like this. Maybe you should move to a big city. Become a lady of leisure. Come on. Look out! Coyotes! Okay. Get to the animals. Come on, they're headed for the chicken coop. ओके, कहाँ पर हैं ये लोग? मैं बचाऊंगा बॉनी तुम्हें, मैं बचाऊंगा। हैं किधर? आई एम द हीरो ऑफ। That coyote won't ये be गया। back. किधर हैं ये लोग? ये मिला, मुझे मिला। ओके ओके, ये Well, we got rid of the coyotes. I just wish we'd saved all the chickens. Come on, I'll show you the way to your room. ओके, हो गया ख़त्म आज का दिन। मज़े तो बहुत आए। You know, you can actually handle a rifle. It's something I've had a little experience in. Maybe Bill Williamson did get lucky after all. Luck didn't really Good. come into it, miss. You're a useful man to have around the ranch, that's for sure. But don't think I've forgotten what brought you here. We'll do whatever we can to help you. I sure appreciate that, Miss McFarland. Here we are. ओह, तो ये है मेरा रूम। Thank you for your help, Mr. Marston. Makes me kind of happy I saved your life. Get some sleep and I will see you in the morning. Good night, Miss McFarland. भाई कितनी बार कह चुकी है कि हमने तुम्हें बचाया, हमने तुम्हें बचाया। That Bonnie is a right pretty girl. She wouldn't look at me. ओके, तो ठीक है, एमो ले सकते हैं। ये हमारा कबाड़ वगैरह छोड़ो, हो चुका है। ओके, डेड आइज। फेम भी है इस गेम में भाई? उसमें तो ऑनर ही ऑनर था, बस इसमें फेम है भाई। अरे ये नहीं, मैप। तो ये है एक मिशन बॉनी मैकफार्लेन का, जो कि होगा अगले एपिसोड में। और आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। जो भी चैनल पे नया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आगे अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली है। और आगे अपने लिए बता देता हूँ, स्पाइडरमैन की एक सीरीज़ आने वाली है पूरी। और जिसने भी यहाँ तक देखा, लाइक कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।